friend Fatma and welcome back to my YouTube channel and welcome back to my DIY video। दोस्तों आज जो मैं DIY लेके आप लोगों के सामने आई हूँ वो काफी ज्यादा aesthetic है। Before we start the video, please do subscribe my channel, hit the bell icon so you can't miss any of my video. Friends, today we are going to make scented candles. For this we need a small glass, fragrance oil and some patches for decoration and candle. Here we settle down the wick in the glass. यहाँ हमारे पास कैंडल मेल्ट होके आ चुकी है और हम यहाँ इसमें ऐड करेंगे फ्रेग्रेंस ऑयल। Now I'm gonna pour this liquid in the glass. Let it set for an hour. और यहाँ मैं इसका दूसरा पेयर बनाने लगी हूँ इन द सेम प्रोसेस। तो ये हमारे पास हो गए रेडी। ये कितने ज्यादा क्यूट और एस्थेटिक लग रहे हैं। यू कैन यूज देम इन एनी कॉर्नर ऑफ योर हाउस। जैसे ही आप इनको जलाएंगे इनमें से बहुत प्यारी खुशबू आप लोगों को आएगी। मुझे तो ये मिनी कैंडल्स बहुत क्यूट लगे। अगर आपको क्यूट लगे तो आप कमेंट करके बताएं। नाउ इट्स टाइम टू डेकोरेट। I'm gonna use glue gun to attach the page. And tada! Our cute lamp is ready. You must need to try this at home and let me know in the comments who tried. अच्छा दोस्तों, तो we are done with today's DIY. I hope you guys like my video. So give this video a big thumbs up. मुझे तो आज का DIY बहुत पसंद आया। बहुत ज़्यादा एस्थेटिक था, बहुत ज़्यादा क्यूट था। आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट DIY में। तब तक wait for the next DIY. So bye bye.